हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज हम रिएक्शन देने वाले एक बांग्लादेशी वीडियो के ऊपर, और ये एक इंग्लिश चैनल ने, यूट्यूब चैनल ने इस के ऊपर कवरिंग की है। तो हम इसके ऊपर रिएक्शन देंगे जिसका नाम है ट्रूथ ऑफ द इंडियन जीडीपी स्लिप एंड रैंक टू बांग्लादेश जीडीपी। अब इस वीडियो को देखते हैं कि इस वीडियो में ये क्या कहते हैं कि बांग्लादेश की जीडीपी कहाँ गई और इंडिया की जीडीपी क्यों स्लिप हुई। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hello and welcome to Simplified, explaining what's going on in the world in just a few minutes. I'm your host Priyanka Deo, and let's get right into the topic with the most recent IMF report stating that Bangladesh is all set to surpass India in per capita GDP. Now, critics are slamming the government and officials for India falling behind Bangladesh, but the reasons they are giving, like demonetization, are actually inaccurately applied in this case. Here's what you need to know. According to the International Monetary Fund's latest World Economic Outlook report, India is about to fall behind Bangladesh in per capita GDP by the end of this year. Over 3 years, Bangladesh's gross domestic product grew at compounded annual rate of close to 13%, which was over twice of India's rate, which was just about 6%. In that period, Pakistan also grew faster than India, and the Chinese economy also expanded. As a result, the per capita income of Bangladesh is growing at close to 3 times the pace of income growth in India and will surpass India by the end of 2020. When looking at per capita GDP, India was significantly ahead of Bangladesh until a few years ago. To its credit, Bangladesh has increased exports and also increased savings and investments over these years. India is also working on diversifying and growing its sectors. In fact, the same IMF report also foresees a sharp recovery for India in 2021, which will get India ahead of Bangladesh once again in per capita GDP. Critics, especially on social media, have been blaming the government and policies like demonetization for India's slip in ranks. However, this is incorrect. Let's take a look at exactly what's going on. Per capita GDP is a metric that measures a country's economic output per person. You can get per capita GDP by dividing the GDP of a country by its population. With that definition in mind, it's actually inaccurate to directly compare both countries. When doing a proper comparison of per capita GDP for Bangladesh and India, the first factor that needs to be looked at is the massive difference in population and GDP sizes of both countries. As per World Bank data, Bangladesh is a much smaller country and had a population of 161 million people and a GDP size of 274 billion US dollars versus India's population of 1,351 million people and a GDP of 2.7 trillion US dollars. The other thing that needs to be looked at when looking at per capita GDP is the population increases of both countries. Between 2015 and 2020, Bangladesh's population grew by just about 1% every year. It went from 156 million people to 165 million. That's an increase of just about 9 million people. In those same years, India's population also grew by just about 1% every year, from 1.31 billion people to 1.38 billion people. That's an increase of 74 million people. Going back to economy, to its credit, Bangladesh's manufacturing sector increased, meaning that more people are getting jobs in manufacturing and improving its per capita GDP as a result. Therefore, Bangladesh's per capita GDP will increase because a larger percentage of the country is getting jobs. But this figure alone does not necessarily indicate that it is economically better than India. Even if India were to give the same number of jobs to people, the per capita GDP would still be significantly less of Bangladesh because India has way more people. Furthermore, India is not the only nation to be hit, as the coronavirus pandemic is an international one. The IMF has stated, and I quote, "All emerging market and developing economy regions are expected to contract this year, including notably emerging Asia, where large economies such as India and Indonesia continue to try to bring the pandemic under control." That same IMF World Economic Outlook report also expected the Indian economy, whose supply and demand conditions in India have been severely hit by the coronavirus pandemic, will therefore dip by 10.3% in 2020, but will rebound by 8.8% in 2021 to once again becomes the world's fastest growing economy. Thanks for watching Simplified, explaining what's going on in the world in just a few minutes. Be sure to like and share this video to your friends and family, and also leave your comments in the section below. We'll see you next time on Simplified. Until then, this is Priyanka Deo signing off. सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात की जाए तो सबसे
इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट ज़्यादा है, आपकी कंट्री ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है, तो आपकी कंट्री ग्रो हो सकती है। अब इसमें देखा जाए तो पाकिस्तान का नाम भी आया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी इंडिया से आगे जा रही है, जीडीपी ग्रोथ परसेंटेज वो इंडिया से थोड़ा आगे। तो इसमें मैं अपनी कंट्री के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि भाई खुदा के वास्ते अपनी गवर्नमेंट जो अभी खत्म हो गई है इमरान खान की, उसके लिए दुआ करो दोबारा आने के दोस्त को, क्योंकि वो अगर इतना सपोर्ट कर रहा है मुल्क को, मुल्क इतने अच्छी तरीके से जा रहा है, तो फिर और किसी लोगों की जरूरत नहीं। खैर हम बात करें बांग्लादेश और इंडिया की। बांग्लादेश की पॉपुलेशन और इंडिया की पॉपुलेशन में जमीन आसमान फर्क है। दोनों कंट्री जो है लगभग सेम चल रही है। इंडिया की ग्रोथ परसेंटेज इस टाइम पे जो वीडियो के मुताबिक है वो तकरीबन कोई 6% है, और बांग्लादेश की देखा जाए तो वो 13% है, और इसके बीच में पाकिस्तान 7% पे चल रहा था। अब इस यहाँ पे देखा जाए इंडिया और बांग्लादेश बहुत सिमिलर है, क्योंकि बंगाल इंडिया के साइड में भी है और बांग्लादेश के अलग भी साइड है। दोनों के लोग का बॉर्डर बहुत क्लोज है। बॉर्डर क्लोज मतलब इस तरह बॉर्डर तो है, बट बॉर्डर इस तरह क्लोज है कि यार लोग आना जाना, जैसे कि नेपाल की साइड पे वैसे इस साइड पे भी है। बट अगर इनके सख्त तरीन बॉर्डर्स देखा जाए इंडिया की, तो वो पाकिस्तान और चाइनीज है। दोनों की तरफ से इनको काफी मुश्किल आते हैं। पाकिस्तान की ट्रेड भी बंद है इसी चीज की। 2019 में जब वो अभिनंदन वाला वाकया हुआ था, तब से पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड भी बंद है। तो हमें देखना यही चाहिए कि जितनी एक्सपोर्ट हमारी ज्यादा होगी, हमारी कंट्री उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। अगर हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री और बर्बाद होगी, हमारी कंट्री को कोई फायदा ही नहीं होगा। बट अगर हम चीजें एक्सपोर्ट करते जाए, वहां से बाहर से डॉलर आए, तो ये कितनी ही बड़ी जबरदस्त बात होगी। इसी चीज को देखे बांग्लादेश ने अपनी ट्रेड को बहुत जबरदस्त बनाया है। ट्रेड पे जो है ना, मैंने देखे हॉलीडेज दी भी है, मतलब ड्यूटी फीस कम की हुई है। और इसी तर्ज पे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने भी यही कहा कि अगर आप ओवरसीज पाकिस्तान में आके ट्रेड करें, तो हम उसको 5 साल तक, तकरीबन 4 से 5 साल तक टैक्स फ्री हॉलीडे देंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। 4 साल में आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो और इतना कमा सकते हो कि अगर 1 साल अगर आप टैक्स दे रहे हो, तो इसमें आपको इतना कोई इशू नहीं होगा। सो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।